when it comes to the teaching of vowel sounds, it's important to know that how many actions are available, activities are there, how and how we can teach them. So in this presentation, we are going to discuss 42 sounds in Jolly Phonics program. What are the difference between vowels and consonant? Understanding of long and short vowel sounds, hand signs, fingertips, Jolly Phonics story action approach, and vowel song. It was awaited for a long time, and I was having lots of requests about this lecture. So let's have a look at these 42 sounds presented in the Jolly Phonics program. Group 1, we have got these two vowel sound. Group 2, 1. Group 3, group 4, we don't have we can say that there is the vowel sound like this one, oo, but in the vowel song we do not represent this oo sound. It's there in the IPA, but we don't consider it here. Here is again representing vowel sound at times, and then we have got these sound like o and oi and and r. These are not the actual vowel sound, but these are having um, you can say that in IPA these are the vowel sounds. Okay, so let's have a look at this. बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम इसको लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बच्चों को या टीचर्स को बहुत अर्ली स्टेजेस में नहीं समझा सकते. So we can have a look at this. Vowels, we use N, and consonant we use लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर, जैसे ऑनेस्ट है जिसमें ह साउंड है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन में ओ आ रहा है तो इसके लिए हम एन ही यूज़ करेंगे. अदर कॉन्सोनेंट्स हैं उनके लिए हम जाहिर सी बात है कि ए यूज़ करेंगे, जैसे ब है, ख है, ड है. सो कॉन्सोनेंट्स ऐसी साउंड्स होती हैं जिसमें जब एयर फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है. वाउल्स जो है उसमें फ्री फ्लो ऑफ एयर होता है. वाउल्स जो है सारी ही लैंग्वेजेस में मौजूद होते हैं और साउंड की प्रोडक्शन में, वर्ड्स की बिल्डिंग में और स्पेलिंग पैटर्न में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. अब हम यहाँ पर आईपी के साउंड्स को देखते हैं. बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, बुक्स के अंदर वॉल्स को 5 वॉल्स या 10 वॉल्स कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब हम आईपी के चार्ट को देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 20 वॉल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं. 44 साउंड्स, इसी तरह से इनका एक पूरा मेकअप होता है. सो अगर आप इस सिस्टम को देखें तो इट्स टोटली डिफरेंट. और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत सी और साउंड ऐसी हैं जिनका जनरली टीचर्स को या स्टूडेंट्स को पता नहीं होता या उन्हें इंटेंशनली जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती इनिशियल स्टेजेस पर. ई, ए, अ शॉर्टेस्ट वॉल साउंड है, श्वा जिसको कहा जाता है. बेसिकली कोई भी लेटर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ये बहुत सारे वर्ड्स के अंदर ये मौजूद होती है. ए, अ, उ, आ, ऊ, ओ, राउंडेड हो जाते हैं इसमें थोड़े से लिप्स आपके. ओ अगेन राउंडेड. डॉट्स जो हैं वो शो करते हैं साउंड जो है लॉन्ग है, शॉर्ट है. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है वो लॉन्ग साउंड्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो शॉर्ट साउंड्स हैं. और यहाँ पर अब हम यहाँ पर इन साउंड्स को देखें, डिफ्थोंग्स में आ जाती हैं जिसमें एक साउंड, एक वॉल साउंड दूसरी वॉल साउंड के अंदर ग्लाइड करती है. इया, उआ, एया, ए, ओई, आई, औ, आओ. सो इनके नीचे एग्जाम्पल वर्ड्स भी मौजूद हैं और हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम टोटली डिफरेंट है टीचिंग सिस्टम से. एनी हो, अब हम देखते हैं कि हमने इस सिस्टम के 20 वॉल साउंड्स को किस तरह सिंप्लीफाई करके प्रोग्राम के अंदर बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, सो दीज आर द हैंड साइंस. Let's have a look at this video. So many thanks to Sabine Ikram and her daughter Saida Fatma for this video. A, A, E, E, I, I. In the box,
O, On the box. O, Under the box. A, A, और अगर आप यहाँ पर देखें ए एट द साइड ऑफ द बॉक्स, अगर आप लेफ्ट हैंड को देखें, लेफ्ट हैंड की फिस्ट हो, उसको राइट हैंड को उसके साथ रखें, ए फिस्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड की फिस्ट हो, राइट हैंड को उसके ऊपर रखें, ई ए ई इन ऑन अंडर. Okay, so for these again you have to look at these words. Snap, इसमें हैंड साइन कहाँ पर होगा, ई. हैंड साउंड कहाँ होगा, ऑन. आ आ अंडर, ए edge. Let's have a look at this video once again. E, I, O, A. Okay, so it's very important to understand that children can learn to read lots of words and understand short vowel sound through these actions. Let's play this once again. A, E, I, O, A. Thank you so much, Fatma, for this video. Now let's move to the next topic. We can also introduce long and short vowel sound through fingertips and finger bottoms. Short vowel sound at the fingertips and long vowel sound at the bottoms. E, I, O, A. A, E, I, O, U. Above are short vowels and here are long vowels. A, I, O, A. A, E, I, O, U. Okay, so we can see that we have got the long vowel sounds here and short vowel sound over here. Like this one, dog with short vowel sound, O with long vowel sound. जॉली फोनिक्स स्टोरी एक्शन अप्रोच. सबसे पहले बच्चों को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं साउंड, तो स्टोरी एक्शन अप्रोच से करवाए जाते हैं. तमाम साउंड्स की डिफरेंट स्टोरीज होती हैं और एक्शन होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप इस य साउंड को देखें, य जो स्टार्ट में आ रहा है, यमी येलो योगर्ट. इसी तरह से ए साउंड को देखें, ए की क्या एक्शन है, क्या साउंड है. लेकिन जब हम इनको वॉल की शेप में करवाते हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वॉल साउंड है, तो फिर ये इंटायरली एक डिफरेंट हमारी अप्रोच हो जाती है. Okay, so let's have a look at this wall song. A, E, I, O, A. A, E, I, O, A. A, E, I, O, A are short vowels that we use. A vowel is in every word, every word, every word. A vowel is in every word that we read or write. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are long vowels that we use. And so my arm, and so my arm, and so my arm, they're causing me alarm. Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Inky's wet. Now it's dark, the lights go on. Oh, 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 oh. Time for bed, the lights go off. Oh, 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 oh. Up go umbrellas, up
go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. My ear hurt, I was in pain, A. My ear hurt, I was in pain. What did you try to say? See the donkey in its stall, E-O, is its call. The captain said aye, the captain said aye. Stand up straight, don't be late, the captain said aye. Oh, did you see the billy goat? Oh, did you see the billy goat under the old oak tree? I'd like to have a barbecue, you. I'd like to have a barbecue with you and you and you. So I hope that you have enjoyed this video, and if you have any questions, you can always contact us.